Good morning, all of you. Welcome you all in this platform of StudyIQ OPSC channel. I hope audio and video both are working fine. Slides are visible and audio is fine. Please confirm those who are online. Good morning, Rajendra. Good morning, Sikha, Jai Jagannath, Pranam Akshay. All of you, good morning. All okay? So today is 13th of September and we'll discuss national international news. Okay, so let's start. Nepal's first, thank you for the confirmation. Nepal's first women prime minister. Retail inflation quickens to 2.1%. Right to information. CP Chandrasekharan takes oath as the vice president. 21% legislators have dynastic background. Sports Governance Act. India votes in favor of Palestine state and blue economy. So let's start. Nepal's first women prime minister. Karki is Nepal's first women prime minister. As you know, civil unrest or civil riot kind of situation in the Nepal. So finally, after a long protest, after a long civil unrest, an interim government has been formed. An interim government, that means the president, Ramchandra Podal, appointed former Chief Justice Susila Karki as the country's first women prime minister. Okay, country's first women prime minister ହିସାବରେ appoint କରାଯାଇଛି ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ. So she will lead the government and finally what a full-fledged government will see in due course of time. Okay, and fresh election have been announced March 5th 2026. So there will be a fresh election and we'll see how democracy again restores in the Nepal, the neighboring countries of ours. According to the office of the president, Mr. Podal dissolved the house and set the election date at the recommendation of the newly appointed prime minister. Mrs. Karki, the 73 years old, the first women chief justice of Nepal, is now the country's first women prime minister as well. So it's good to see that Nepal, which is a small country and unstable country, is having the first women chief justice. But India, which is considered as the mother of democracy and India's largest democracy, in fact, does not have the women chief justice yet. Okay, amra eparjanto women chief justice heinahandi. Anyway, soon we'll get that. Okay, next. Retail inflation quickens to 2.1%. Retail inflation, that is consumer inflation, what we call. Okay, consumer inflation जोटा आम कौन मेजर कर CPI, consumer price index. Okay, let's see. Retail inflation increased to 2.1% in August 2025. 2.1%. Range kete 2 to 6%. So inflation in August was 2.1% and it was increased from 1.55% in July, breaking a 9-month decline streak since November 2025. The August figure is marginally above the RBI's comfort zone. Comfort zone कहते 2% to 6% हमें जानी चु 2016 रे जो अपन का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 थिला तो को अमेंडमेंट करा गला एंड थ्रू दैट अमेंडमेंट वी हैव ए रेंज ऑफ जोटा हमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग बोली कहूचे and that range is 4 plus minus 2, that is 2 to 6%. And through that amendment also one monetary policy committee was formed. What a monetary policy committee we form करा जाइतला. So food and beverage inflation जते देखिए almost flat 0.05%, lower than the 5.3% in August 2024. Okay, clothing and footwear inflation, and inflation have been eased कोटु जଣା पड़ुची because last 2 times we have seen policy rate or repo rate has been revised by the RBI, okay, to
boost to the economy to increase the money supply in the economy. Monetary Policy Committee has revised the policy rate or repo rate सेटाकू कम करा जाइछि. What we have seen, housing inflation जदि देखिबे that is 3.06% in August and 3.03% in July. Fuel and light inflation, which is considered as the more vulnerable, rising to 2.9% in August from 1.4% in July. So overall आपण देखिबे fuel and light inflation जोटा आपण इलेक्ट्रिसिटी ये सब प्लस आपण स्लाइटली आपंकर जो इटा रहा कोटा हाउसिंग इन्फ्लेशन ये स्लाइटली बढ़ी जो कि आपन को ये नंबर देखा मिलूँ 2.1%. ऑयल्स इन्फ्लेशन सर्च टू 21.2% बिकॉज ऑफ द हायर ग्लोबल प्राइसेस ड्यू टू दिस जियोपॉलिटिकल टर्मोइल, जियोपॉलिटिकल टेंशन. व्हाट इज दिस लो बेस इफेक्ट कि कोई परिबे लो बेस इफेक्ट या सिंपली बेस इफेक्ट कौन? बेस इफेक्ट माने होची सपोज आपण अगस्त 2025 को कंपेयर करूछन कहा सहित अगस्त 2024 सहित. जदि अगस्त 2024 रे इन्फ्लेशन रेट वाज क्वाइट लो तेणु ए मार्जिनल इंक्रीज और स्लाइट इंक्रीज इन द अगस्त 2025 विल गिव यू अ रिजल्ट ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज और सिग्निफिकेंट इंक्रीज. सीधी पे कहा जाउची लो बेस इफेक्ट. दैट मीन्स बेस इफेक्ट होची जस्ट करस्पॉन्डिंग ड्यूरेशन करस्पॉन्डिंग मंथ करस्पॉन्डिंग टाइम प्रीवियस ईयर ता सहित आम कंपेयर करूचे. ओके जेहेतु अगस्त 2024 रे ऑयल इन्फ्लेशन कम थिला तो एबे मार्जिनल इंक्रीज इन द ऑयल प्राइस shows a significant increase in the oil price in 2025. इठी आपण देखि परिबे इंचिंग ऑफ 5.66 ये आपनकर फूड इन्फ्लेशन होची रेड कलर जोटा सिग्निफिकेंटली डाउन जाइतिला जुलाई मासरे बट स्लाइटली इंक्रीज्ड इन अगस्त 2025. ओके एंड ये होची आपनकर ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन एटा होची 2.07% रे आसी कि पहुंची एंड कंबाइंड होची आपनकर 2.1% अछि. इन्फ्लेशन टार्गेटिंग मु जेमति आपन कहउतली 2016 रे आमे रेंज डिसाइड कलु प्रथम 5 वर्ष पई 2 to 6, 2016 to 2021. एगेन 2021 रू 26 पर्यंत भी सेम रेंज अछि. एगेन एटा को रिवाइज करा जिवो 2026 रे. ओके सो विल सी से रेंज चेंज होबो या सेम रेंज से माने रखिबे फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स. वर्तमान 2016 रू 2025 पर्यंत जो 10 इयर्स रो ड्यूरेशन थिला दे हैव केप्ट द सेम range 2 to 6%. Lower is the 2, upper is the 6. Okay. Next jiba and consumer price index आपण जानि थिबे. consumer price index होची consumer point of view रो मेजर करा जाय जोटा हमें retail inflation भी कहू, retail price index भी कहा जाय. 2014 पर we have started measuring inflation in CPI. आगुरु आमे WPI रे करूथिलु. What was the merit with respect to that? Because it measures price from the consumer point of view, consumer side. सी कौन करे प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू या प्रोड्यूसर साइड रू मेजर करे. ओके तेणु 14 पर आमे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ही यूज करूचे. मूविंग टू द नेक्स्ट आरटीआई को लेकिन गोटे आर्टिकल आसाला. आरटीआई विथ रिस्पेक्ट टू आमर जो डेटा प्रोटेक्शन एंड जो एक्ट आसाला डिजिटल पर्सनल एंड डेटा प्रोटेक्शन ताकू नहीं कि आरटीआई को को भली भाव अमेंड करा जाइछि. देखिबा प्रथम आरटीआई देखंतु आरटीआई होची राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड दिस हैज बीन केप्ट अंडर द आर्टिकल 19 एक्सक्लूसिवली ऑब्वियसली नुहे या एक्सप्लिसिटली नुहे बट इन मल्टीपल जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कहिछि राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर दिस आर्टिकल 19 जेमती फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तेणु इनफॉरमेशन जानिबा मध्य व्यक्तिर अधिकार अछि. तेणु सेइथि आपण कहिबे रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल एटा कोठी देखा जाए डेमोक्रेसी रे देखा जाए. सेइथि जते इनफॉरमेशन अछि गवर्नमेंट रो तार जानिबार अधिकार का पाखे अछि द सिटीजन ऑफ द कंट्री. ओके तेणु गवर्नमेंट एक्ट्स एज द कस्टोडियन ऑफ दिस इनफॉरमेशन एवं दरकार पड़ले से शेयर करिबा का सहित पब्लिक का सहित इंडिविजुअल सहित. तेणु राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट आपणकर कौन कहूँ
प्रति व्यक्तिंकर इनफॉरमेशन जानिबार अधिकार अच्छे। ओके चलो देखिए आगु को। अच्छा एग्जेम्पशन कौन अच्छी ना पर्सनल इनफॉरमेशन। सपोज आपन कहिबे कि गोटे इंडिविजुअल रो इनकम जानिबा पई आपन यदि आरटीए फाइल करूछंदी तो आरटीए मे नॉट प्रोवाइड यू दैट इनफॉरमेशन, बट प्राइम मिनिस्टर को इनकम जानिबार अच्छी देन आरटीए विल प्रोवाइड दैट इनफॉरमेशन। देन व्हाई दिस डिफरेंस? गोटे पर्सनल इंडिविजुअल इनकम डज नॉट डीलिंग विद द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, तेणु से आपन को पर्सनल इनफॉरमेशन तार दिज्व ना, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी प्राइवेसी। बट इन केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हिच इज डीलिंग विद द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, से आप देखिए व्हेन एवर दिस एमपीज एंड एमएलएज दे फाइल नॉमिनेशन दे हैव टू प्रोड्यूस देयर प्रॉपर्टी, और से एगेन्स्ट जदि किसी क्रिमिनल केसेस अच्छी से नॉमिनेशन फाइल करने को सेठी मेंशन करने को पड़ो, और से जगह से शपथ पाठ करने को पड़ो। If there will be any discrepancy, then a stricter action will be taken, or you can say सेमानकर कैंडिडेचर को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाई पारे। तेणु ये गोटे जिनस। सेकेंड हूँ नेशनल सिक्योरिटी। आपन कहिबे ऑपरेशन सिंदूर रो पूरा स्ट्रैटेजी मत दिखाओ, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज दैट इज वेरी मच कॉन्फिडेंशियल, दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी। और व्हाट वी आर प्लानिंग विथ रिस्पेक्ट टू काउंटर द चाइना जदि इन फ्यूचर हमको अटैक करे, पाकिस्तान जदि हमको अटैक करे, जमती आप देखिए एमपीज मैंने ये करि पारंती कौन क्वेश्चन पचारि पारंती, बट जो मिनिस्टर सपोज डिफेंस मिनिस्टर को आंसर भी देवार अच्छी एंड काफ़ी सुपरफिशियल वे से स्ट्रेटेजी आपन को कहीदेवे हाँ मैं डिप्लॉय करूँ, वी हैव दीज मेनी फ्रंट्स, वी हैव पीपल और आर्मीज जो मैंने डिप्लॉय करा जाइए। तो ये हूँ सुपरफिशियल, बट डिटेल स्ट्रैटेजीज दे विल नेवर शेयर विद द पब्लिक बिकॉज दैट कैन कॉम्प्रोमाइज द नेशनल सिक्योरिटी। तेणु आरटीआई रु एग्जेम्प्ट करा जाउची पर्सनल इनफॉरमेशन as well as the national security. It stipulated that personal information could be denied if it had no connection with the public activity or constituted an unwarranted invasion of the privacy of the individual unless there was a larger public interest in its disclosure. Okay, जमती आप देखिए कोर्ट बारंबार मना करुच्ची प्राइम मिनिस्टर को डिग्री को देखा, बट जो मैंने एक्टिविस्ट अच्छा दोज आर फाइलिंग द पिटिशन व्हाट दे आर सेइंग प्राइम मिनिस्टर इज द पब्लिक ऑफिस, राइट? सो एवरी सिटीजन हैज द राइट टू नो कि से डिग्री कौन अच्छे, तेणु व्हाट इज द हार्म इन पब्लिसाइजिंग इट। तो ये हूँ जिनस। अच्छा प्रॉब्लम कौटू आसी जो डिजिटल आपणकर प्रोटेक्शन जो डेटा डिजिटल जोटा आपणकर टोटल गोटे एक्ट गोटे कंप्लीट एक्ट आसीथिला डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। एठी कौन करा जाइछि देखंतु रिड्यूस्ड फ्रॉम डिटेल्ड गाइडलाइंस टू 6 वर्ड्स मेकिंग इट इजी टू डिनाई इन्फॉर्मेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ना रे किसी इनफॉरमेशन को दिया जाई परिबो नाही या हाइड करा जाउछि। ओके एम्बिग्यूटी रखा जाइछि विथ रिस्पेक्ट टू पर्सनल इनफॉरमेशन। कौन एम्बिग्यूटी देखंतु नेचुरल पर्सन इंटरप्रिटेशन वर्सेस ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ डीपी बिल। जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इंक्लूड कौन करा जाइछि देखंतु ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टेट एक्सपैंडिंग व्हाट कैन बी लेबल्ड एज पर्सनल। तो जो पर्सनल जो शब्दटी अच्छी ताकू काफ़ी वाइडर इंटरप्रिटेशन करा जाइछि एंड जेहेतु पर्सनल इनफॉरमेशन ना रे प्राइवेसी को भी हाइड करा जाउछि अंडर दिस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। तेणु दैट लीड्स टू व्हाट डिनायल ऑफ द इनफॉरमेशन। तेणु पर्सनल इनफॉरमेशन ना रे आपण कौन करें मना कर दे पारे कि आमे शेयर करूँ ना। ओके तेणु एठी जो अमेंडमेंट आसी दैट कंट्रावेन्स द वेरी एसेंस ऑफ द आरटीए एंड से ग्राउंड रे जमती मु कहली गोटे इंडिविजुअल गोटे XYZ गोटे कॉमन मैन रो पर्सनल इनफॉरमेशन आपनकर दरकार आपन को मना कर दिया गला, बट जड़े पब्लिक ऑफिस रे अच्छी बट आपन को दिया जीवो। बट से ग्राउंड रे एठी से जिनस को कहा जाइछि कि पर्सनल इनफॉरमेशन शेयर करा जाई परिबो नाही। दैट मीन्स जे पब्लिक इंटरेस्ट रे भी थिबो तार भी मध्य आपण डिनाय करि परिबे। दैट मीन्स प्रोटेक्टिंग आपण कहि परिबे
जोटा कि गोटे टाइम रे ट्रांसपेरेंसी को कॉम्प्रोमाइज करुच्ची गोटे ओपिक्स सिस्टम क्रिएट करुच्ची सोसाइटी रे देखो ओवर 90% ऑफ द डॉक्यूमेंट्स माइट बी विथहेल्ड इवन एसेंशियल्स वन लाइक पेंशन लिस्ट और एकेडमिक रिकॉर्ड्स तेणु ये भी गोटे प्रकार जिनस जोटा कि राइट टू इनफॉरमेशन डिनाई करा जाउची द बिल ओवरराइडिंग क्लॉज अलाउज इट टू टेक प्रेसिडेंट ओवर ऑल अदर लॉज इंक्लूडिंग आरटी एक्ट and severe penalties could discourage disclosure ओके ये जो ओवरराइडिंग पावर मु कहली तो आरटी एक्ट को कंट्रावेन करुच्ची ओवरराइडिंग पावर या पाखे अच्छी सो दैट पर्सनल इनफॉरमेशन को शेयर करा जाई पारिबो नहीं आउ कोन देखंतु लॉस ऑफ सिटीजन मॉनिटरिंग सिटीजन्स आर प्राइमरी वॉचडॉग्स अगेंस्ट करप्शन डिनायल ऑफ इनफॉरमेशन वीकन्स पब्लिक ओवरसाइट जो सिटीजन मॉनिटरिंग लॉस ऑफ सिटीजन मॉनिटरिंग होची जनरली आपण देखिबे सिटीजन्स माने आरटीई फाइल करिकी एक्टिविस्ट माने आरटीई फाइल करिकी से माने करप्शन को अनवील करंती से माने इन्फॉर्मेशन मागंती एंड दैट बिकम्स ए मैटर ऑफ डिबेट दैट कम्स टू द पब्लिक फोरम देन ओनली सेटा देखा जाए कि करप्शन हेछि ना नहीं फर्दर ताको एग्जामिन करा जाए तेणु जेतेबेले आमे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ग्राउंड रे ताको आमे कोन करबा प्रोटेक्ट करूचे that means transparency कोठी ना कोठी compromise हो hindrance to fighting corruption cases like ghost employees fake beneficiaries may be hidden as personal information जमती fake beneficiaries अछंती आपनकर नरेगा वर्कर होंतु पीडीएस बेनिफिशियरी होंतु सेठी भी अछंती एंड घोस्ट एम्प्लॉइज भी अछंती तो से जगह रे भी आमे कोनोसी प्रकार रो अनवील करि परिबा नाही पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना रे ताको प्रोटेक्ट करा जिवो एंड ये करप्शन को भी एनकरेज करिवो Plus, rare use of larger public interest clause exemptions are rarely overturned by providing public benefit, making the clause ineffective. Okay, तेने जो larger public interest बोली जो clause टी थिला RTA रे ताको कोठी ना कोठी ये कौन करूची ineffective करी दोची on the ground of personal information. Public apathy and need for action कौन देखिबा ना मीडिया एवं सिटीजन्स आपण देखिबे से माने या ऊपर कौनसी रिस्पॉन्स दो नाहंदी ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हैज बीन मोडिफाइड इन ए सच ए मैनर नो वन इज अवेयर अबाउट इट कि एभली गोटे कंसर्न आमको फ्यूचर रे देखिबा को मिलिबो तेणु व्हाट वी नीड टू डू वाइड स्प्रेड डिस्कशन पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन मोबिलाइजेशन और वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट भी कहि परिबे एंड आई थिंक यू नो दिस विगत 10 वर्ष हेलानी आपण ओडिशा केस रे भी देखंतु इंडिया केस रे भी देखंतु यू ओंट फाइंड मच आरटी एक्टिविस्ट इधर से माने साइलेंस ही छंदी या तांको करि दिया जाइछि ड्यू टू मेनी सच रीजंस फंडामेंटल अटैक ऑन डेमोक्रेसी सेक्शन 8 क्लॉज 2 44 क्लॉज 3 ऑफ द डीपीडीपी बिल अंडरमाइन फ्रीडम एंड राइट्स transparency and accountability and democratic governance are also at risk. Okay. CP Radhakrishnan takes oath. देखो जो 15th और 17th को लेकिन काफ़ी चर्चा चली थी 15th आज ए पर्सन 17th आज ए पोस्ट ये जिनस को टिके मन रखिए चंद्रपुरम Ponnuswamy Radhakrishnan was sworn in as the 15th Vice President of India at Rashtrapati Bhavan. President Draupadi Murmu administered the oath. Constitutional provision: the Vice President of is elected under Article 66 of the Constitution, and the Electoral College consists of all members of both the houses of the Parliament, may be elected or nominated. कारण प्रेसिडेंट रे आमे कोन करू केवल इलेक्टेड माने ही वोट दियंती बट इन केस वाइस प्रेसिडेंट बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड. स्टेट लेजिस्लेचर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. वोटिंग सिस्टम कोन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. ये जो नॉर्मल इलेक्शन हमर होची असेंबली इलेक्शन या आपनकर पार्लियामेंट इलेक्शन ये इलेक्शन आपण देखिबे फास्ट पास द पोस्ट सिस्टम होची बट एठी कोन होची प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपनकर प्रेसिडेंशियल केस रे भी होची. ए जो टर्म टा गुडी बुझी दिबे कारण चांसेस अछि आपनकर क्वेश्चन आसीबो एग्जाम रे जो माने प्रीलिम्स दउचंदी खास करके प्रेसिडेंट रो जो इलेक्टोरल कॉलेज अछि ना ताकू टिके बुझी नै दिबे. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होची आपन देखिबे सपोज कैंडिडेट जिते जन थांती बैलेट पेपर रे सेमानक नाम लिखा जाता है
एंड एमाने समस्त को प्रिफरेन्स दियंती कि सपोज वाइस प्रेसिडेंट थिले ये राधाकृष्णन थिले और जस्टिस जो अपन सुदर्शन थिले तो सपोज मु कौन कली राधाकृष्ण को फर्स्ट प्रेफरेन्स देली 1 लिखिली सुदर्शन को 2 लिखिले ओके सेमती आउ जने आसिले सुदर्शन को 1 लिखिले राधाकृष्णन को 2 लिखिले सो दैट शोज द प्रेफरेन्स तो प्रथमे समस्त फर्स्ट प्रेफरेन्स को काउंट करा जिवो यदि फर्स्ट प्रेफरेन्स एक्सीड्स द 50% ऑफ द टोटल इलेक्टोरल कॉलेज देन दैट पर्सन विल बी इलेक्टेड बट यदि 50% क्रॉस न कला देन सेकेंड प्रेफरेन्स काउंट करा जिवो कि सेकेंड केते जन को वोट देइछन तो ये हूँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सीक्रेट बैलेट ओबियसली कारण कहीं देखिपर ना दैट्स सिंपली प्राइवेसी टर्म्स ऑफ ऑफिस देखिए 5 years बट कैन रिजाइन अर्लियर धनकर जी को केस में देखीचे और 2/3 मेजोरिटी हिसाब से रिमूव भी करा जाई पारिबो केवल 2/3 मेजोरिटी बोथ द हाउसेस बट राज्यसभा जेहेतु से एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन रिजोल्यूशन इनिशिएट करा जिवो राज्यसभा द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा presiding over its session and ensuring smooth parliamentary functioning. The Vice President steps in acting President in case of the President's death, resignation and removal. Next देखिए 21% legislators have dynastic background. Around 21% of MPs, MLAs and MLCs, legislative councils in India come from dynastic backgrounds, meaning they belong to established political families. Breakdown by House and Assembly. Lok Sabha highest 31% dynastic representation. State assemblies it's the 20. 5,204 legislators analyzed across the Lok Sabha, Rajya Sabha and the state assemblies and legislative assemblies councils. 1107 has the dynastic roots. तो 5204 जन को एनालाइज कला 1107 जनकर डायनेस्टिक रूट अच्छी रीजनल इनसाइट देखो नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश हैविंग द हाईएस्ट वन जोटा कि नॉर्थ इंडिया रे 23%, राजस्थान 18%, साउथ इंडिया कर्नाटक रे 29%, आंध्रा 34% विच इज द हाईएस्ट इन द कंट्री, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट बिहार 27%, असम इज द लोएस्ट दैट इज 9%. एब्सोल्यूट नंबर यदि देखिए 141 ऑफ द 604 representative, Maharashtra 129 out of the 403 and 96 of 360 representatives. तो जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म हो या इलेक्ट्रल सिस्टम हो या भितर ये पॉइंट को आपण कोठी ना कोठी ऐड करि परिबे डायनेस्टिक बैकग्राउंड या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को लेके. नेक्स्ट स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट देखिबा आपण जानिथिबे नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट ऑलरेडी हमरो इंप्लीमेंट पास हो सारी छी प्रेसिडेंट असेंट दे सारी छन एक्ट रे कन्वर्ट हो सारी छी मॉनसून सेशन रे ही आस्तिला. यार मेन पर्पस कोन थिला देखंतु आपने जानिथिबे हमरो जो प्रॉब्लम सब अछि आपने देखंतु जेमती नेशनल बैडमिंटन एसोसिएशन जो अछि हमरो इंडियन बैडमिंटन एसोसिएशन या बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया तारो प्रेसिडेंट की इंटरेस्टिंगली तारो प्रेसिडेंट होचंती हेमंत बिस्व शर्मा द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम एंड ऑलरेडी इज ए पॉलिटिकल फिगर ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट बट स्टिल ही इज हैविंग दिस पोस्ट. तो जेपर्यंत सपोज कौन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नथिले तांकू दियागला इट्स ओके बट आफ्टर द बिकमिंग द सीएम तथापि तांकू दिया जाइए. तो कोठी ना कोठी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज गुड़ी को इंडिया रे इट्स नॉट फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल क्लाउड ये गोटे फैक्टर थिला. सेकेंड स्पोर्ट्स टैलेंट को कोठी ना कोठी इग्नोर करा जाउची. ओके करप्शन रोची जमती बीसीसीआई आपण देखिए दैट डज नॉट कम अंडर द आरटीआई. तेणु ये सब जिनस को मैनेज करने और एड्रेस करने एक्ट इज बिल्ड ऑन 3 पिलर्स दैट इज एथलीट सेंट्रिसिटी. प्रायोरिटीज क्या दिज्व एथलीट को दिज्व नीड्स एंड राइट्स ऑफ द एथलीट, गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड फेयर प्रैक्टिसेस, फेयर सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स कैंडिडेट्स प्लेयर्स आपनकर इन्वॉल्विंग ऑन द प्लेयर्स इन द गवर्नेंस बोर्ड. ओके and global alignment ensuring adherence to the Olympic Charter of international regulation. जमती एग्जांपल देली आम स्पोर्ट्स पर्सन को जगह आम पॉलिटिशियन मन को प्रायोरिटीज दौचे विथ रिस्पेक्ट टू आई मीन देर आर पीपल दोज डू नॉट हैव एनी लिंक विद द स्पोर्ट्स दे आर इन्वॉल्व इन द स्पोर्ट्स गवर्नेंस.
Sources of framework. The drafting process studied both Indian precedents and international model, US, Australia, UK and France, which have established sports codes and governance norms. Key provisions. National sports bodies must have a general body with equal representation from affiliate members and designated ex officio members. Structure aims to ensure fairness without compromising the autonomy. Okay, तेणु fairness को ensure करेगा and आपनकर must have a general body with equal representation. Kodu na affiliate members and ex officio members. तेणु sports person plus administrative इमाने समस्ते रहिबे and we have replicated from models from US, Australia, UK, France, etc. So जोटा की combination of both. Autonomy versus governance. Concerns about external interference were addressed, emphasizing that good governance norms are globally accepted and existed since 1975. International bodies, including IOC, sports governance standards, do not oppose such reforms. Okay. So, International Olympic Association जो अछि, that also supports this kind of governance structure or new structure of governance in India, and they do support this process. Next देखिए, India votes in favor of Palestine state. India voted in favor of UN General Assembly resolution endorsing New York Declaration for peaceful settlement of the Palestine issue, implementation of the two-state solution. 142 nations supported the resolution, 10 nations against it, and US देखो US and Israel they voted against, and 12 nations abstained. Okay, that means India supported, voted and supported. Okay, endorsement of the New York Declaration and the peaceful settlement of the question of Palestine and implementation of the two-state solution. बहुत समय two-state solution करके question आसे related to which of the following states. So it's Israel and Palestine. Introduced by France, co-chaired by the France and Saudi Arabia, and then you can see European countries are supporting the existence of the Palestine. Discussed at high-level conference in the UN headquarters in July 2025. Declaration of key points देखो, collective action to end the war in Gaza, peaceful and lasting settlement. So ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସିଛି କି ରଷିଆ ଆଣ୍ଡ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପିସ୍ ଆକର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ପଜ୍ଡ. ତେଣୁ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍, ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାଇମ୍. ତ ଯଦି ସେମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ପାଲେଷ୍ଟିନ୍ ଇଜ୍ରାଏଲ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲେ ତ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ୍ ଟେନସନ୍ ୱିଲ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବି ଦେୟାର. ସୋ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଅନସର୍ଟନିଟିଜ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦେୟାର. ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଜିନିଷକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି. Urge the implementation of two-state solution, envisioning a sovereign and visible Palestine state. Seeks to build a better future for Palestine, Israel's and regional populations. तो start ହେଇଥିଲା ହମାସରୁ ଆସିକି end ହେଉଛି peaceful existence of Palestine state. India position देखिए, India reaffirmed its support for peaceful conflict resolution and two-state framework, aligns with the long-standing diplomatic approach towards the Israel-Palestine issue. तो India is actually balancing both the countries. Israel साथे भी हमर रिलेशन भलो अछि because of this डिफेंस डील. ये सब पालेस्टीन को भी हमें नाराज या ताको हमें अपोज करू ना हूँ, ताको भी हमें सपोर्ट करूँ बिकॉज ऑफ दिस इस्लामिक स्टेट. आप देखिए रेजोल्यूशन यूएई भी थिला. ओके, तेणु ये जो आप साउदी अरेबिया थिला, तो ये आपंकर स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी अच्छी. वाई इंडिया इज सपोर्टिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ पालेस्टीन because of the support from the Islamic states, and Islamic states यदि support करेंगे definitely they can counter the Pakistan. So Pakistan would not take any adverse action against India at the global level, से terrorism हो or any such scenario. Okay, तेणु ये होची आपनकर जिनस. यदि UN General Assembly आपण देखिबे, UN General Assembly आपण जानिथिबे जो 15 जन अछंती आपनकर नॉन परमानेंट मेंबर्स 2 years टेन्योर को नेकी से थांती. 5 जन परमानेंट आम जाचु, जोटा को 5 जन परमानेंट को UN सिक्योरिटी काउंसिल बोली कहुए, एंड 15 जन नॉन परमानेंट जोटा कि 2 years रे रोटेशन बेसिस रे से इलेक्ट होकर आसती. नेक्स्ट ब्लू इकोनॉमी देखिए. केरला कैपिटल टू होस्ट 2-day ब्लू इकोनॉमी कनक्लेव. ए 2-day ब्लू इकोनॉमी कनक्लेव टाइटल ब्लू टाइड्स, मन रखिए बेटा, ब्लू टाइड्स 2 Swords 1 Vision will be held in Thiruvananthapuram
केरला ऑन सेप्टेम्बर 18-19 ऑर्गेनाइजर को मन देखो केरला's फिशरी डिपार्टमेंट यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन पार्टिसिपेशन 29 यूरोपियन कंट्रीज 17 countries have confirmed participation including Finland, France, Hungary, Poland, Slovakia, Slovenia, Sweden, Denmark, Bulgaria, Austria, Malta, Spain, Italy, Netherlands, Belgium, Romania and Germany. And Herb Delphin, EU ambassador, European Union ambassador to India and Bhutan will attend. Okay, what is this blue economy? The blue economy refers to sustainable use of ocean and coastal resources for the economic growth, improved livelihoods, jobs, while preventing health of the ocean ecosystem, integrates environmental, social, economic consideration to ensure that marine resources are used responsibly. Basically, जो blue economy आपण देखुचंदी तार मेन आइडिया होची environment and economy with respect to the ocean sources जो ocean resources in fact अच्छी ocean रे आपण देखंतु एक तो आपनकर फिशरी होची आपण ट्रेड रूट हिसाब रे यूज करूचंदी मैरीटाइम सिक्योरिटी आमे जोटा कहूचे फिशिंग एक्टिविटीज होची माइनिंग एक्टिविटीज होची सो ओवरऑल जदि आपण देखिबे जेति कि आपनकर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अछि ना विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट सी टाइप रो आपनकर बायोडाइवर्सिटी मैरीटाइम ट्रेड एवं माइनिंग फिशिंग ये सब भी आपनकर ओशन इकोसिस्टम रे भी रहउची तेणु टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सहित ओशन इकोसिस्टम भी इक्वली इंपोर्टेंट तेणु आमुक से रिसोर्सेस तो आप देखिए जो सी बेड माइनिंग करा जाए ओके तो फिशिंग भी करा जाए जमती फिशरमैन कम्युनिटी श्रीलंका अच्छा से मैंने डीप सी जानती आमर भी तमिलनाडु जो फिशरमैन अच्छा से मैंने भी जाऊँ डीप सी तो ये लाइवलीहुड पाई भी गोटे बेनिफिट करे प्लस आप देखिए बर्तमान आम कर पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी जी पोर्ट गुड़िक आपंकर अच्छी मेजर पोर्ट्स गुड़िक तार कनेक्टिंग कनेक्शन एस्टाब्लिश करी आम इंडस्ट्रीज एस्टाब्लिश करूँ सो दैट इनक्रीज द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज तो ये सबू जिनस को लेकिन आम ब्लू इकोनॉमी बोली कहचे फिशरी एंड एक्वाकल्चर देखो फिशिंग सी फूड प्रोडक्शन विदाउट ओवर एक्सप्लॉइटिंग द मैरीन लाइफ तेणु ये गोटे सस्टेनेबिलिटी लाइवलीहुड को लेकिन आम कहचे टूरिज्म एंड रिक्रिएशन आप देखिए जमती आपणकर मालदीप अच्छी सेमती आम लाक्षाद्वीप को डेवलप करूचे अंडमान को डेवलप करूचे फॉर दिस कोस्टल टूरिज्म विथ द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रिन्यूएबल ओशन एनर्जी जमती विंड वेव टाइडल ऑफशोर सोलर एनर्जी से टाइम ओशन एनर्जी भी रोचे ओके सिमिलरली मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एंड पोर्ट्स लॉजिस्टिक जमती पोर्ट लेड फैसिलिटीज अपन को कहली शिपिंग इंडस्ट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री ये सब जिनस मराइन बायोटेक्नोलोजी एंड फार्मास्यूटिकल्स न्यू मेडिसिन सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट्स ये सब मराइन लाइफ आसूची मराइन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गुड़िक आम मेडिसिन्स प्रोड्यूस करुचे नेक्स्ट हूँ क्लाइमेट रेजिलियंस एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन आमको अर्ली वार्निंग सिस्टम हो सुनामी हो राइजिंग टाइडल सर्ज हो ये सब जगार भी आमको सस्टेनेबल प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने को पड़ो प्रोटेक्टिंग द कोस्टल कम्युनिटीज जमती आम ओडिशा देखिए हेन्ताल वन आम क्रिएट करुचे मोर मैनग्रोव फॉरेस्ट आर क्रिएटेड ओनली बिकॉज टू प्रोटेक्ट द कोस्ट मराइन कंजर्वेशन एंड रिजर्व प्रिजर्विंग इकोसिस्टम प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड इन्वेस्टिंग इन साइंटिफिक रिसर्च फॉर बेटर ओशन गवर्नेंस तेणु ये भी गोटे फैक्टर जोटा कि आपंकर ब्लू इकोनॉमी रे रोचे ओके मराइन कंजर्वेशन एंड रिसर्च व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस होचे आपंकर ओशन तेणु क्रुशियल फॉर फूड एनर्जी ट्रेड क्लाइमेट रेगुलेशन एक्सेट्रा बिलियंस डिपेंड ऑन ओशन फॉर द लाइवलीहुड ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्सेस प्रॉब्लम थ्रेट कौन अच्छी ओवरफिशिंग पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज सी लेवल राइज सबमर्जेंस ऑफ जो आपंकर आइलैंड कंट्रीज गुड़िक अच्छी तेणु से वी नीड टू हैव आप जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखिए ना सेठी भी आपंकर मराइन लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ मराइन लाइफ इज वन ऑफ द
वन ऑफ द 17 गोल्स आप देखिपारे SDG रे भी मध्य अच्छी तेणु बैलेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज द की ensuring the long term benefits for the communities and the future generations. Okay, प्रिंसिपल्स कौन देखो सस्टेनेबिलिटी इक्विटी इनोवेशन गवर्नेंस सस्टेनेबिलिटी जमती आम कहलु इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट दुईटी को प्रोटेक्ट करने को पड़ो इक्विटी बेनिफिट्स टू ऑल इट इज नॉट द एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ एवरी और एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ एनी इंडिविजुअल और एनी पर्सन और एनी कंट्री सो बेनिफिट लोकल कम्युनिटीज को मिलवा दरकार इनोवेशन हवा दरकार गवर्नेंस भी मध्य हवा दरकार विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल कोऑपरेशन सो इन ए डेमोक्रेटिक मैनर जमी साउथ चाइना सी रे कहूँ चाइना टेरिटोरियल क्लेम करुच्ची से भली हवा कथा नुहे इट्स ए डेमोक्रेटिक रिसोर्सेस ओके रिसोर्सेस बिलोंग टू एवरीवन MCQs राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट प्राइमरली बेस्ड ऑन व्हिच प्रिंसिपल government information belongs to citizens by default. National Sports Governance Act is built upon which of the following pillar? Athlete centricity, good governance and global climate. India voted in favor of which resolution at UN regarding Palestine? Endorsing New York Declaration for peaceful settlement and two-state solution. Blue Tides Two Swords One Vision conclave focuses on which area? That is sustainable development of the ocean-based economy. Okay, so that's it. Achiever batch हमर already start है 8 September रू आपण join करि परिबे एवं पुनी थरे कहू रखुची काली ऑलरेडी राती मिडनाइट रे लास्ट थिला एबे भी वैलिड अछि मत लागुची 12टा सुधा एटा डिसकंटिन्यू हो जिवो जो माने चाहूचंदी कोर्स रे जॉइन करिबा पई कोड यूज करिकी चेन लाइव आपण सब्सक्राइब करि परिबे सो दैट आपण डिस्काउंट मैक्सिमम डिस्काउंट पाई जिवे ओके थैंक यू वेरी मच PDF आपण को टेलीग्राम